Good Yes, right. afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode of Rendezvous with Anza Saqib on CxO Global TV. CxO Global Forum is a knowledge sharing platform for all C levels across the globe. We take massive pride in contributing to the knowledge economy with our League of Extraordinary Thought Leaders. Now, they're not just thought leaders, but those key individuals, those domain experts that are now affecting policy and decision making in the fields that they're working in. Today, as well, we've got an extraordinary gentleman. His name is Mr. Ghulam Shabbir. He is the COO at Momentum Private Limited. Welcome to the show, sir. Thank you very much, Anza. Thank you. Very kind of you to join us. So let's start from the beginning. Where did your journey begin? And what has brought you here till the COO at Momentum? All right. Thank you very much at the first place. This is really very exciting feeling to be here on this CxO Global Forum Rendezvous. So it all started after my MBA during the year 2001. So I have precisely two parts of the career. Initial 10 years I have spent with some of the eminent multinationals across Pakistan and abroad, working in the various fields. And there I have been able to take care of the roles like business development, trade marketing, and brand management. Then Right. later part of career may I joined this Momentum Pvt Limited in the capacity of Chief Operating Officer. It is basically consulting, public policy, and aviation and aerospace company. So I Wow. look after the entire set of operations of this organization, as well as I perform my role in the capacity of organizational transformation and strategy consultant with the organization. Yeah. Amazing. अच्छा सर आपने ये तो हमें बता दिया कि what exactly your role at Momentum entails. But let's talk about being a consultant since you've been involved in consultancy for quite some time now. So what is the most important quality in your opinion of being a consultant for multiple and diverse sectors जैसे कि आप अभी भी currently you're serving? देखिए जो सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी है दैट रेस्ट एट द बॉटम, जो कि बुनियाद पे रहती है किसी भी कंसल्टिंग एंडेवर के लिए, वो कंसल्टेंट की अल्टीमेट इंटेग्रिटी और अल्टीमेट सिंसियरिटी है। कंसल्टेंट को सबसे पहले हर हवाले से उसकी जो इंटेग्रिटी है वो बेदाग होनी चाहिए, और उसको सिंसियर होना चाहिए विद द वर्क दैट द कंसल्टेंट इज डूइंग, बिकॉज उसका जो काम है उससे न सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम लोग, तमाम एम्प्लॉयज़, तमाम स्टेक होल्डर्स और इवन उन एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ और उन स्टेक होल्डर्स की फैमिलीज़ जो हैं, उनका फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। सो दिस इज़ द क्वालिटी नंबर वन। और जब मैं ये कहता हूँ कि सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी हो, तो कंसल्टेंट को अपने हर एक स्टेप पे इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर उसको काम नहीं आता प्रॉपर तरीके से, या उस प्रोफिशिएंसी लेवल पर नहीं आता जिसकी के रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, तो सिंसियरिटी से और दयानतदारी से बताना चाहिए कि दैट दिस इज़ नॉट द वर्क दैट आई एम एक्चुअली प्रोफिशिएंट फॉर। तो सबसे पहली क्वालिटी तो आई वुड से वो ये है, राइट। Right. और फिर इसी के ऊपर आपकी सारी की सारी अगली जो फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के ऊपर आपकी सारी अगली जो बिल्डिंग है वो रेस्ट करती है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइवर्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कंसल्टिंग में जो बहुत अहम क्वालिटी है, दैट इज अगेन आई वुड से वो बहुत अहम सुतून है, बेसिकली एक पिलर है, दैट इज कि कंसल्टेंट को हमेशा लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसको एटलीस्ट 15-20 ईयर्स आगे की लर्निंग और आगे की मैपिंग जो है उसको फ्यूचर में नज़र आने का उसको हुनर आना चाहिए। और उसके लिए उसको हर वक्त सीखते रहना है, अपने अंदर, अपने बाहर, अपने इर्द गिर्द, उसे हर वक्त सीखते रहना। और देन अगेन स्टेक होल्डर इंगेजमेंट या स्टेक होल्डर के साथ जो उसकी एसोसिएशन और रिलेशनशिपिंग है, दैट इज़ द अदर पिलर। उसको स्टेक होल्डर्स के साथ एक पुरएतमाद तरीके से लेकर के चलना है। इस तरीके से लेकर के चलना होता है कि स्टेक होल्डर्स
कंसल्टेंट के साथ उस रिलेशनशिप में वैल्यू देखें कि अगर हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाते हैं तो इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इस काम के लिए और इस काम से जुड़े हुए हमारे लोगों के लिए बहुत सारी वैल्यू एडिशन जो है ना वो नजर आ रही है. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट आई थिंक. Right. Very pertinent points made, sir. The next set of questions is basically going to be a new round that we introduced. तो मैं आपको चंद चीजें mention करूंगी and you're going to tell me within, one or two lines, the first thing that comes to your mind. So how do you perceive the following? Number one, leadership. लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इट इज़ ऑल टुगेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने बुनियादी तौर पे अपने आप को और अपने वो लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं उन सब की वेलबींग को और उनकी अचीवमेंट को इंश्योर करना होता है. Amazing. Failure. फेलियर इज़ अ टीचर. फेलियर इज़ अ टीचर. और ये बेसिकली आपको इनफैक्ट पोजीशन करता है कि आप उससे क्या लर्न करते हैं और आगे अपना रास्ता कैसे तयन करते हैं. Success. सक्सेस एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. बेसिकली अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपने लोगों के लिए, अपने आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए बेसिकली वैल्यू ऐड करना, उनके लिए जो है ना बेसिकली कुछ अच्छा कर जाना, दैट इज सक्सेस. इस केस में आप अगर मुझे अंजा अलाउ करें तो एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है राल्फ वाल्डो एमरसन की. वो है तो बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मैं उसको एक सेंटेंस में अगर समराइज करूं तो उसने ये कहा कि टू नो that even a single life has breathed easier just because you have lived, it is to have succeeded. Absolutely. I agree. Well, how beautiful, sir. Last one, mentorship. Yeah, mentorship, this is basically, I would say, ये तो खजाना है, right? और ये वो खजाना है जिसके साथ एसोसिएट करके आप इस दुनिया में वंडर्स कर सकते हैं. Amazing. Sir, moving on to the next question. हम ये परसीव करते हैं कि सी लेवल पोजीशन पे कोई और खासकर COO हो तो यू आर लिटरली वर्किंग दिन के 24 नहीं 25 से 26 घंटे constantly because everything that goes on at the company comes through you. So how is it that even after so many years you have managed to keep that balance? आप कैसे unwind करते हैं after work? देखिए इनफैक्ट ये है कि ज़िंदगी में डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं एंड ऑफ कोर्स काम जो है वो हमारी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को फुलफिल कर रहा होता है. तो आफ्टर वर्क इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द फैमिली एज वेल एज अदर रिलेशनशिप्स दैट यू हैव. और उसमें अनवाइंडिंग की जहाँ तक बात है तो जस्ट थ्रू स्मॉल एक्ट्स, just through simple jokes, or just through invigorating association with your children, with your wife, with your parents, and as well as with the other relations, आप जो है ना उसको alive रखते हैं. That's I think it is the best medicine and it is the best unwinding as well. और जब जब आपको मौका मिले तो थोड़ा आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी आप एसोसिएशंस पर जाते हैं. यू ट्रैवल विद इन द कंट्री, यू ट्रैवल अब्रॉड, तो आपको वहां पर भी बहुत अच्छा मौका मिलता है. Right. Sir, what are those 3 things about you that we cannot figure out from your LinkedIn profile? This is indeed a very, very intelligent question. Probably my LinkedIn profile tells very little that I do as a professional. It tells very little that I do as a professional. And it does not mention the kind of the thought process that I have actually, particularly in the fields where I work in. और वो thought process इसलिए नहीं बता पाता कि because वो मेरा thought process जो है वो documented नहीं है. Say like for example, I work in the domain of public policy, organizational transformation and change, as well as strategy. I'm here in Dubai these days. I have been, here for a conference, very good at a very good scale. But it does not cover at all. एक तो ये बात है. Secondly, it does not
tell really that what kind of contributions that I like to make, as a matter of my responsibility towards the society that I undertake. जैसे for example, मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड्स पर हूँ, मैं इसके अलावा जो है ना मैं बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़ में हूँ यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे मैं वैल्यू ऐड करता हूँ और चीज़ें करता हूँ। और एजुकेशन में मेरी इसके अलावा और काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह contributions हैं which I do for the sake of only contributing to my country, to the youth of my country and to the universities of my country, right? तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड यस, मेरे जो लाइक आई मीन बहुत काइंड ऑफ जो है ना लाइक मेरे पास टाइमिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ वेरी गुड गोल्फर। और इसी तरह से जो ना आई एम वेरी लाइक एविड राइडर, मुझे पेट्स बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें प्रॉब्ली वहाँ पर नहीं है। दैट्स ग्रेट सर। सो सिर्फ राइडिंग या पोलो भी? नहीं, नॉट पोलो, राइडिंग ओनली। जस्ट द यूजुअल ट्रॉटिंग एंड यस। that's beautiful. Of course, thank you for sharing these insights about yourself. थैंक यू। Moving on, you spoke about contributing to Pakistan and society at large. So, if I were to ask you, what are your top policy recommendations today? What would they be? देखिए, द टॉप मोस्ट द ओनली रिकमेंडेशन जो मैं कहना चाहूँगा, एंड आई solemnly स्टैंड बाय विद दिस आल्सो, दैट इज हमें बेसिकली अपने एजुकेशन को हर लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना होगा। Absolutely. और जब मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो हमें ये सोचना है कि हमें एजुकेशन राइट अवे फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स कैसे देना है। फिर सर, स्कूल में आर्टिकल 25A तो कहता है हमारी आइन का कि हमें मतलब बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। ये अलग बात है कि ये पेन ऐसा ज़रूर, बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आता हूँ। 25A बिल्कुल कहता है, लेकिन 25A के ही लाइक अंडर एम्बेड आप ये देखिए कि इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ के लगभग बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं। बिल्कुल। राइट, राइट। और जो बच्चे हमारे एजुकेशन ले रहे हैं एंजा, आई बिलीव के लाइक 4 to 5 years फ्रॉम नाउ उनका जो एजुकेशन है दैट इज गोइंग टू गेट इररिलेवेंट टू द वर्ल्ड दैट वी आर इन एक्चुअली। ठीक है। आप एब्सोल्युटली। खुद आप सर, खुद ये तो एक हम भी बहुत जब बड़े हो रहे थे तो आईसीटी में पढ़ते थे, फ्लॉपी डिस्क कभी देखी नहीं। कभी लेकिन अभी देखी। सिलेबस में वही चल रहा होता है तो, और ना कभी एग्जैक्टली। सो तो, सो देखिए, अब आप ये देखिए, क्योंकि आप खुद एक इतने बड़े थिंक टैंक को जो कि जिसका हाँ, ताल्लुक टेक्नोलॉजी से भी बहुत क्लोज है, आप उसको देख रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर रहते हुए। सो एक तो हमें एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, हर लेवल पे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं हम उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स की एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करें। हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव वेज ऑफ एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रन एज वेल एज आवर यंगस्टर्स हमें सोचने हैं, नंबर वन। नंबर टू, व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, तो हमें हायर एजुकेशन के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज एक बहुत ही सिंसियर मैनर में ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर के आना है। राइट। सो हायर एजुकेशन इज समथिंग विच इज एक्चुअली गोइंग टू सस्टेन अस, बिकॉज हमारा 67% जो है वो यूथ बल्ज है एक्चुअली। और राइट, अगर हमने इस हायर एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, जो कि हम नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो अगेन अगले आने वाले 5 7 8 सालों में हमारा ये जो यंग सो कॉल्ड डिग्री जो है ना लाइक होल्डर यंगस्टर है, ये बेसिकली हम इसकी भी जो एसोसिएशन या इसकी जो रेलेवेंस विद द करंट वर्ल्ड है और विद द अपकमिंग वर्ल्ड है, वो हम खो देंगे। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्लो टू आवर इकोनॉमी, बिकॉज हम अपने ह्यूमन रिसोर्स से बहुत कुछ अपनी इकोनॉमी के लिए कर सकते हैं। राइट। और इस ह्यूमन रिसोर्स से कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स को राइटली एजुकेट करें, इसको राइटली ट्रेन करें और इसको राइटली पोजीशन करें ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। utilizing human capital, very important. Sir, thank you so much for sharing these valuable insights with us today. It has been an honor and a privilege. Please keep contributing to the knowledge economy. In the interest of time, we will have to wrap up right now. But before I let you go, I would like to ask you, what do you think is the utility of forums like CxO Global?
I mean, there's a big utility. There's no question about it. Or CxO Global Forum जैसे जो think tanks हैं, they actually provide you with a platform, with an opportunity to come across diversified ideas, diversified people, people from different backgrounds. और इस diversity और इस inclusion के through हम मिलजुल के बहुत सारे जो हमारे कॉन्करेंट दुनिया के मसाइल और चैलेंजेस हैं उस पर न सिर्फ बात कर सकते हैं, बल्कि उसके ऊपर हम क्रिएटिव सोल्यूशन जो है ना वो भी पुट इन प्लेस कर सकते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फाइंड एज अ वैल्यू इन forums like CXO. Thank you. Appreciate it. And we'll see you very, very soon and keep hearing from you. Thank you very much. Thank you for organizing it. Thank you. Thank you. Ladies Allah. and gentlemen, that's all for today. But stay tuned with us. Keep watching. Keep us updated with your comments and feedback. If you want to learn more about who we are and what we do, log on to www.cxoforum.global. And we'll see you next time with another very special guest. Allah Hafiz. Hafiz.